जय जगन्नाथ पिलाମାନେ आज आम लिमिट रो 14 क्लास नंबर 6 रो 11th नंबर करने वाला है। ओके, तो 11th नंबर क्या है, 11th फिट क्या है, आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। ओके, तो 11th का नंबर है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनाइट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनाइट -1 to the power greatest integer of x, greatest integer of x। okay, greatest integer of x। okay. देखो सॉल्यूशन करना है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मैं तो बता दिया। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.005 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, तो एटा को इंटीजर मध्य रही पूर्ण संख्या भितर रही सबुठारु सान पूर्ण संख्याटा ही तार वैल्यू। यदि 1 रो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे तो एटा तो 1 आसीबो, सब पूर्ण संख्यार ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सेटा आसीबो। बट पूर्ण संख्यार जदि किछि पॉइंट आसला तो सेटा को इंटीजर भितर रहउची, तो समान को मध्यरु जोटा लेस इंटीजर तो दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इट। से सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर विषय हम जाने दरकार नै। वर्तमान हमें आर लिमिट एग्जामिन करिया। ओके, तो गुड देखो 1 रो पावर सपोज 1, तो आंसर है 0 टू 1 रो पावर 0 तो 1, जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। 1 रो पावर 1 इज इक्वल टू 1, 1 रो पावर 2 इज इक्वल टू 1, 1 रो पावर 3 इज इक्वल टू 1, 1 रो पावर 4 इज इक्वल टू 1, 1 रो पावर n इज इक्वल टू 1 if n is sorry 1 रो पावर if n any इंटीजर जेकोनोसी इंटीजर हेले भी 1 रो पावर से नेचुरल नंबर यदि पॉजिटिव इंटीजर हैला ताले 1 रो जेकोनोसी पावर नबो तार वैल्यू 1 ही आसीबो। वर्तमान को अगर पावर -1 तो पावर 1 केते होप्ले -1 आसीबो। -1 रो पावर 2 केते आसीबो 1 आसीबो। -1 रो पावर 3 केते आसीबो -1 आसीबो। -1 रो पावर 4 केते आसीबो 1 आसीबो। -1 रो पावर 7 केते आसीबो -1 आसीबो। -1 पावर 10 केते आसीबो 1 आसीबो। जदि 1 हुए 1 रो पावर जा भी आसीबो 1 रो पावर जहा बेले आंसर होची 1 आसीची। यदि -1 रो पावर भी देखो आंसर 1 एटा -1 आसी। देखो कोठी आसी 1 1 सो कोठी आसी पावर 2 4 10 सामान्य केता हो इवन। जदि पावर टा -1 रो पावर इवन आसीबो तो सेते बेले -1 रो पावर इवन आसला तार वैल्यू हिचिबो 1। जदि पावर टा ऑड आसी तार वैल्यू आसीबो कोन -1। जानते तो कौन होता तो एठी प्रश्न उठुची -1 रो पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जदि सपोज x का जदि x तार आंसर केता आसबो इफ x इज इवन। जदि x टा इवन हुए तार ग्रेटेस्ट इंटीजर x इवन माने सपोज x इज इक्वल टू 2, ताले x रो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो के 2 त माने -1 पावर 2 हैला कोन आंसर आसबो 1। जदि x टा ऑड हुए सपोज x इज इक्वल टू 3 तार ग्रेटेस्ट इंटीजर होबो केता आसबो 3 आसबो। ताले -1 रो पावर 3 केता आसबो -1। तमे एठी बोल देखला x जदि इवन आसिला x हम जानना ना इवन क्यों जदि x टा इवन आसिला ताले -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x आसबो
प्लस 1 अगर x टा ऑड हो जाए ताले -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -1 ओके तो सेटा को हमें x टा को नबा दीटा देखो सॉल्यूशन बनबा let x is even suppose x टा हेले even this implies that अच्छा even पे हमें कौन नौ से तो मल्टीपल ऑफ 2 2 रो मल्टीपल ना सपोज तले कहबा डेटा इवन द सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज इवन सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑड द प्रूफ जतले करतले क्लास 6 7 ते करतले टू इवन नंबर गोटे नउतले 2m नउतले गोटे नउतले 2m डेटा ऐड करतले होतला हमर ओ 2 कॉमन नहीं गले m plus n तो m plus n जहां भी हो तो मल्टीपल ऑफ 2 so this is even so addition of two even number is also even suppose odd नउतले 2m plus 1 even रे 1 ऐड कर लेटा odd जातले पुणी गोटे odd नउतले 2m plus 1 दिटा odd करतले तो एडिशन करके केते होतला 2m plus 2n plus 2 ये 2 कॉमन नउतले m plus n plus 1 is equal to ये जहां होना कहीं 2 रा मल्टीपल माने ये also even number into sum of two odd integer is also even number छाड़ा तो जो even नउतले ताने even नंबर टा हम algebraic फॉर्म में केमति लिखतले x is equal to suppose 2m okay x is equal to 2m तांगे x is equal to 2m okay if ताला को m द्वारा कन्वर्ट कर दो x tends to infinity then m tends to infinity the x infinite है तो m भी infinite होगा ना x is equal to m तो 2m tends to infinite तो m tends to infinite होगा x tends to infinite m tends to होगा infinite बर्तमान लिमिट होगा हमें चेंज कर लेंगे तो लिमिट x है कौन पकेगा m tends to infinite -1 to the power कितना बेटा x का ले हमरा 2m टेस्ट इंटीजर ऑफ 2m अच्छा इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इनफिनिट 2m कहले कोन even -1 रो पावर even आसी गला माने सो दैट इज कॉल्ड आंसर इज 1 केते 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट रो लिमिट ऑलवेज कांस्टेंट होता है कौन अच्छे ओके तो बर्तमान x इज इवन नेक देखले बर्तमान आंसर आसला 1 तो बर्तमान नबा x इज odd let x is odd integer this implies that x is equal to neither 2m plus 1 or 1 of them even plus 1 2m plus 1 then देखो if x tends to infinite then m tends to also infinite okay तो बाहर करो लिमिट x tends to infinite को लगा m tends to infinite -1 to the power x आगे तो क्या पाया 2m plus 1 -1 to the power 2m plus 1 2m plus 1 को रोटे odd -1 का पावर odd होची सब बड़े -1 is equal to limit m tends to infinity r मानेला -1 तो -1 infinite लिमिट होची -1 तो बर्तन देखो एटी लिमिट x tends to infinity -1 to the power x गोटे 1 भरची गोटे -1 भरची किंतु लिमिट रो जहाँ भी नपा x tends to infinite ले जाहले गोटे मूल्य बाहरियो एटी कोन भरची डबल मूल्य बाहर एटी LHL RHL कथा पडिली LHL RHL कथा पूर्वरु प्रथम तो देखिबे आर वैल्यू टा केते भीतर रहउछ तो लिमिट रो वैल्यू सदा बले जहाँ भी पुट करो गोटे ही आसी तो LHL आसु तो RHL आसु मीनिंग टा सेम आसु यदि सेम आसु एठी लिमिट वैल्यू इन्फिनिटी भेले x जगह यदि इवन वर्ड पड़ जाउची तो वैल्यू टा हमरो चेंज होची डिफरेंट होची सो हियर limit doesn't exist तो लिमिट केम एग्जिस्ट करियो
लिमिट जहाँ भी पकाओ इनफिनिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट पकाओ 0 पकाओ 1 पकाओ वैल्यू सब बेले 1 आसी तो एटी वैल्यू केतेटा आसी दीटा वैल्यू आसी तो एटी लिमिट एग्जिस्ट करू ना तो लिखि दबो हेंस लिमिट doesn't exist ओके तो एटी सहित नंबर 6 xi बिट सर जाइछि वर्तमान आमे जिबा तार नेक्स्ट बिट x डबल i तो आगरी किछि धूप ମୋ ଆଗରେ କିଛି ଧୂପ ତୋ ଦେହରେ କିଛି ଫୁଲ ମୋ ଦେହରେ କିଛି ଫୁଲ ତୋ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ ମୋ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ ତୋ ବେକରେ ମାଳଟିଏ ମୋ ବେକରେ ମାଳଟିଏ तो लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट sin x अच्छा sin x तो ठीक सॉल्यूशन sin x रा में लिमिट बाहर करिया देखिया एग्जामिन परीक्षा करिया LHL RHL बाहर करिया किता पूर्व देखिया LHL RHL पूर्व देखिया लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट sin x पता न को sin रो वैल्यू केते केते मधरे बिलोंग्स करछि sin धर sin केते पड़छे 0 डिग्री पड़छे 30 डिग्री पड़छे 45 डिग्री पड़छे 90 डिग्री पड़छे बजा कोंदी हमरो अबे जो रेडियन तरफ हमरो पाई बाय 2 पड़छे पाई पाई पड़छे 2 पाई बाय 2 पड़छे 3 पाई बाय 2 पड़छे तापर भी 2 पाई 3 पाई 4 पाई एक्सेट्रा n पाई पड़छे ओके तो जहाँ भी वैल्यू आसु तो हमर वैल्यू टा सब बेले तार वैरी करूची केते केते तो -1 ରୁ 1 जहाँ भी sin एंगल पड़ू जहाँ भी रेडियन पड़ू sin पाई बाय 2 पड़ू 2 पाई बाय 2 पड़ू 3 पाई बाय 2 पड़ू 4 पाई बाय 2 पड़ू n पाई बाय sin n पाई बाय 2 को बा sin n पाई को ये जहाँ भी तमे वैल्यू पकेइबो सब जाकर मूल्य केते केते आसीबो -1 ରୁ 1 भितर आसीबो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रे जानि थिबो ओके तो वैल्यू सब बेले -1 ରୁ 1 भितर आसीबो तो जानिनो मन रख sin आउ cos tan जहाँ भी सब जगह हमरो -1 ରୁ 1 भितर तार वैल्यू कोन वैरी हो से जहाँ भी वैल्यू -1 ରୁ 1 भितर बिलोंग होथबो बर्तन देखि देबा तो सपोज हम गोटे न पाई तो पाई बाय 2 गोटे पाई 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 नबा गोटे पाई बाय 2 पाई नबा दीटा मूल्य देखिया जदी सेम आसुथिबो त जानि बले एमते एग्जिस्ट करछि सेम न हले एग्जिस्ट करूनी पाई बाय 2 दर पाई नबा 2 पाई नबा 3 पाई नबा 4 पाई नबा बा n पाई नबा एटा 2 पाई बाय 2 हो बा 3 पाई बाय 2 हो तो हमें डायरेक्ट नबा n पाई बाय 2 ओके ओके तो एटा केतो 2 तो लेट नबा let x is equal to suppose x is equal to nabam first 2n pi x is equal to naba suppose 2 pi 3 pi 4 pi 2n pi naba suppose x is equal to naba 2n pi तो आपको बाहर करिया आ गुट नबा x is equal to कहते हैं गुट नबा 2n pi नबा आ गुट नबा x is equal to 2n pi plus pi by 2 plus 9 तो एटा नै कि हमें लिमिट को सेट करिया ओके देखो x is equal to 2n pi देखो if x tends to infinity then x to the infinite हला तो n tends to be कोन infinite x to the infinite हला n भी infinite हो तो बर्तन लिखो लिमिट n tends to infinite sin x है तो क्या 2n pi
दुईटा पाई है 12 पाई अच्छा sin 12 पाई ର वैल्यू केते sin पाई होची 0 2 पाई भी 0 3 पाई भी 0 4 पाई भी 0 12 पाई भी केते आसीबो 0 आसीबो तो limit n tends to infinite 0 is equal to constant ର limit सब बेले से constant रही थाए ओके आंसर आ 0 अच्छा एपट देखिया let x is equal to 2n pi plus 2 pi by 2 हम देखो if x tends to infinity n tends to be infinity तो ओके दबा limit n tends to infinite sin 2n pi plus pi by 2 limit n tends to infinite 90 है के sin 90 हो हमरो 1 तो pi by 2 1 2 pi by 2 1 3 pi by 2 1 ये सब ही 1 रे आसीबो तो आंसर है हमरो केते 1 तले देखो x टेंड्स टू इनफिनिटी sin x रो मूल्य हमरो आसुची केते 0 आ एथरे मध्ये सेमते आसी लिमिट रो उठे परफेक्ट मूल्य आसी तो परफेक्ट मूल्य आसीले सिना मते गले चला रचना प्रूफ करे तो बर्तमान एथरे जे हम x रो मूल्य जहां भी किछ प्रपोज लिमिट एग्जिस्ट करू ना कोठी 0 आसी तो कोठी 1 आसी ओके तो सेति पे हम कोन करिया वर्तमान करि करिया लिमिट डजंट एग्जिस्ट देखि देबा हेंस limit doesn't exist. Okay. लिखी दियो राजा को है रानी तो बस नेक्स्ट नंबर को 6 रो 13 नंबर बिट राजा को है रानी सुन कहानी सितारा देखो 6 नंबर 10 ऑर्बिट ये मध्य सेम क्वेश्चन cos x भी -1 1 भीतर वैल्यू करछि ये भी एग्जिस्ट करिवो नाही देखि दबा तो लिखबा let x is equal to 2n pi नबा 2n pi plus pi by 2 नबा तो नै जीवा 2n pi नै कोन हे जीवा if x tends to infinity we simply that n tends to infinity हे जीवा तो limit n tends to infinite cos 12 pi केते जीवा limit n tends to infinite cos pi ର मूल्य केते 1 तो ऐसे जो 1 is equal to असगला 1 से बड़े let x is equal to 2n pi plus pi by 2 नबा if x tends to infinity then n tends to be infinity तो लिखिबा limit x tends to infinite cos x जगह तो ओके परिया x जगह रे 2n pi plus pi by 2 is equal to limit x tends to infinity pi by 2 ला 0 आंसर है 0 एठी मध्य cos x ର वैल्यू भ्यानिश करछि 1 और 0 रहछि तो हम लिमिट केन बाहर करे लिमिट पर्टिकुलर पॉइंट रे गोटे बाहर दरकार जेतु अलग अलग बाहर छै वैल्यू तो तमे एलएचएल आरएचएल न किछ आवश्यक पड़नी तो ये डज नॉट एग्जिस्ट को देख दबा हेंस लिमिट डजंट एग्जिस्ट ओके ताले किजा वर्तमान जीवा 14 नंबर बिटी किते जुको लुकाई चाहिथिला जीवर हसिले प्रभुरा भइरेला पयर किते जुको लुकाई चाहिथिला जीवर हसिले प्रभुरा
बसाई नारे मेला से बहिरे बसाई। तो बर्तमान जीवा 14 नंबर पेज 14 नंबर देसी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1 by x दैट इज 0 दे देसी ना देखो। अच्छा 1 by x टा कौन करिया मन करो x चेक गुण करो। अच्छा 1 by x टा लेट्स करिया कौन करिया लिमिट चेंज करिया लेट y is equal to 1 by x let y is equal to 1 by x that's right। यदि x tends to 0 if x tends to 0 okay x tends to 0 then y tends to get infinite। x tends to 0 hole y is 1 by x तो 1 by 0 tends to infinite तो y tends to infinite तो लेखो लिमिट चेंज करो लिमिट एटा कोन है y tends to infinite x जगह रे cos 1 by x जगह तो को 1 by x होची y it already called it a limit doesn't exist it is also proof for proof करने limit x tends to infinite cos x doesn't exist करछना नहीं true ठीक है जल्दी करना कर दो नेक्स्ट दो let y is equal to 2n pi let y is equal to 2n pi okay something y tends to infinity if y tends to infinity this simply that n tends to infinity ଯେମିତି ସେଥିରେ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରିବ କଣ ହବ the limit y tends to infinite sorry y ଟା ନୁହେଁ କଣ n tends to infinite cos 2n pi is equal to କେତେ ହବ cos 2n pi ହଉଛି ଆମର କେତେ 0 sorry 1 cos 2n pi ହଉଛି ଆମର କେତେ 1 ପୁଣି if let y is equal to 2n pi plus pi by 2 तो तब हम करें लिमिट n tends to infinite cos कितने जो y जगह 3 हो जाए 2n pi plus pi by 2 is equal to limit n tends to infinity plus 0 is equal to 0 तो ये भी hence limit doesn't exist कितने इजी ओके तो सहित 6 नंबर आई एक्स आई बी 14 नंबर बिट सर जाइए ଏବେ ଯିବା ଆମେ 15 नंबर बिट बसाई नारे नीला से बहिरे जगमेरानी ओके जेबा वर्तमान 15 नंबर बिट कौन देछि एग्जैक्टली सेमति कर दबो कौन कर दो लेट y लेट एट नै दियो सॉल्यूशन लिखि दबो let y is equal to sin 1 by x अच्छा if x tends to 0 limit change कर x tends to 0 is simple that y tends to get 0 1 by x if y tends to get 0 infinite हेलो कने डाले फिर limit y tends to 0 okay sin 1 by x जगह पे क्या y and this is हला तो এটা জানি যে এটা भी लिमिट y tends to 0 sin y sin y एडजस्ट करन थे हम करन थे लिमिट x tends to 0 sin x এটা কোন বার করতে डजंट एक्जिस्ट से जहा करा है এটা সেটু সে कर दबो लिख दबो let y is equal to 2n pi okay नेक्स्ट प्रमाण कर दो if y tends to infinity then n tends to infinite
तो पके दबो लिमिट n tends to infinite sin 2n pi is equal to limit n tends to infinity sin 2n pi plus 0 is equal to plus 0. ସେମିତି now let y is equal to 2n pi plus pi by 2. ସେମିତି y tends to infinity, this will be that n tends to infinite. So now limit n tends to infinity sin 2n pi plus pi by 2 is equal to limit n tends to infinity, এটা হলো আমরা 1 is equal to 1 देखो ये hence limit doesn't exist. Okay, ସେଇଟା 15 नंबर बिट सरी जाइए किछि ने कम एक्सप्रेस लिमिटर प्रूफ करे. ओके तो जिबाबे नेक्स्ट बिट 16 नंबर बिट. ओके केते जुगुरु कानी चाहिथिला बरो आसी गुरम होइदिला पोलो. लिमिट x टेंड्स टू 1 देछि f of x देछि. ये देखो ये क्वेश्चन दा बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम बेसिस क्वेश्चन. ओके लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x देछि. f of x रो वैल्यू टा पर्टिकुलर गोटे वैल्यू देइनी देइछि केते वैल्यू ना if केते हबो ना 2x plus 1 f of x is equal to 2x plus 1 हबो केते बेला ना जदी x less or equal to 1 हो ताले 2x minus 1 हबो जदी x greater than 1. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा बेसिस क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x वैल्यू पे केते देइन फंक्शन टा देइछि बट टिके कंडीशन कर देइछि f of x टा 2x plus 1 हेबो जदी x टा कोन हबो लेस और इक्वल टू 1. जदी 1 x टा 1 रो सान हबो बा 1 होय तार तार x f of x 2x plus 1 जदी x टा 1 रो बड़ होय तार हबो 2. सपोज x is equal to 5. Suppose x is equal to 5 तो f of x केता हबो greater than 1 एटा. Suppose x is equal to minus 2 तो f of x केता हबो 2x plus 1. Suppose f of x is equal to 1 तार मूल्य हो छै खाली एति दे कंडीशन दे जदी x रो सान बा समान लेस और इक्वल टू देन 2x plus 1 हबो जदी x रो बड़ 2x minus 1 पूरा कंडीशन पर्टिकुलर दे तो कंडीशन करी दे किछि नै सेमति करियो एला जरा जरा प्रूफ करिया. ओके सॉल्यूशन किछि नै केवल प्रूफ करिया LHL तो कहि छी देखो लिमिट x टेंड्स टू LHL माने 1 एपॉर्ट रो 0 एपॉर्ट रो LHL माने लेफ्ट टू नबा h माइनस करिया एकरा पछ गुना पाखर कोन 1 माइनस पका f of x अच्छा is equal to देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस परसेंट. अच्छा f of x 1 माइनस में देखो 1 रु कोन हला माइनस माने कम हला जदी x टा में 1 रु कम नौ छै x टा जदी हमें 1 रु कम नौ छै तो f of z केते लेके 1 रु कम 2x plus 1 लिखबे 2x plus 1 लिखो. It's close to 1. Okay. मुझे क्वेश्चन देते भूल गए 2x minus 1 सर এটা হচ্ছে আমার কি কিতে ভুল হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে 2x minus 1 এটা 2 যদি x র কম হলা তাহলে 2x minus 1 x র अधिक হলে 2x plus 1 minus 1 ରୁ କମ ନେଲେ x tends to 1 minus ଯଦି କମ ନେଲେ 1 ରୁ କମ ହେଲେ f of x କେତେ ପକେଇବା ଏଟା ହଉଛି f of x ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 1 ରୁ କମ ହେଲା ଏଟା ପଡିବ
एक रो अधिक हेले एटा पड़े समान हेले भी एटा पड़े ओके 2x - 1 2x - 1 टोटल जेन तमे प्रूफ करते सेम कर दबा कौन करता x tends to 1 minus तार माने x is equal to नबा के 1 minus s नबा where s tends to 0 ओका बोले is equal to लिमिट चेंज कर दबा x जगह पे बकिया s tends to 0 2x 2 into x जगह पे बकिया ये जो 2x जगह पे बकिया 1 minus x 2x minus 1 is equal to limit s tends to 0 2 minus 2s minus 1 is equal to limit s tends to 0 2 1 गले होची हमरु 1 minus 2h 1 minus 2h ओके तो s जगह 0 पुट करी दियो केते हो 1 minus 2 into 0 0 is equal to हमरा इसका 1 1 1 1 तापर छला rs कर्म ए जगह 0 पुट करतो कोन अछि एटा कोन अछि ए जगह 0 पुट करबा ना rs सेमति जीवन limit x tends to 1 plus f of x like is equal to limit x tends to 1 plus अच्छा 1 plus कले कना यार दिबो and 1 to बड़ 1 to बड़ हम कोन जे f of x ର value 2x plus 1 पके दबा 2x plus 1 पके दबा એટલે कि दबा x tends to 1 plus ता माने x is equal to केतना नबा 1 plus s नबा where s tends to 0 नबा तो देखो एठी is equal to limit कौन करथला s tends to 0 2 whole into 1 plus s plus 1 is equal to limit s tends to 0 आगे जोरे 2 plus 2s plus 1 2 plus 2s plus 1 ए जगह 0 पुट कर दो केदा हो 2 plus 0 plus 1 is equal to 3 तो देखो LHR के दास RHR के दास LHR is 1 RHR is 3 your LHR is not equal to RHR hence limit doesn't exist okay that is why to home XVI 16 नंबर सरी जाइछि वर्तमान जीवा में 17 नंबर क्वेश्चन श्री मंदिर जाछि स्वर्ग द्वार 17 बात 17 नंबर देछि limit x tends to 0 f of x limit x tends to 0 f of x and how to देछि limit x tends to 1 f of x limit x tends to 1 f of x if f of x if f of x is equal to 0 गोटे दबो 1 minus 2x गोटे हबो आ गोटे 3 minus 4x 0 केते हबो 0 केते बेले आसबो हमरो if x less or equal to 0 1 minus 2x केते हबो x टा 0 ରୁ 1 भीतर होतो 1 से तो समान होतो ना 0 ରୁ बड़ होतो 3 minus 4x केते हबो ना x greater than 0
limit x tends to 0 f of x limit extension f of x ଯଦି f of x ଟା 0 ରୁ ସହିତ ସମାନ ହଉଥିବ 0 ରୁ ସାନ ହଉଥିବ ଏଟା ହେଲା 0 ଏଟା ହେଲା 1 ଏଟା ହେଲା -1 ଏ ଭିତରେ ଦଉଛି f of x ଟା ଯଦି 0 ହେଇଗଲା ବା 0 ରୁ ସାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆସିବ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ଯଦି x ଟା 0 ରୁ ବଡ଼ ହଉଥିବ 0 ରୁ ବଡ଼ ହଉଥିବ ବା 1 ରୁ ସାନ ହଉଥିବ ଆ ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆସିବ 1 minus 2x ଯଦି 0 ରୁ ବଡ଼ ହଉଥିବ ये भी 0 ରୁ ବଡ଼ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଆସିବ 3 minus 4x 0 ରୁ ଜଷ୍ଟ ବଡ଼ ହଉଥିବ ହେଲା ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଆମର ଲିମିଟ बाहर करो चल बाहर करो फर्स्ट आगे फर्स्ट लिमिट आप बाहर करो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x पे बाहर करो ओके l h l l h l l h l लिखिबा देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस से कोन हो हमरो जानिचो 0 ରୁ माइनस माने 0 ରୁ पछकु 0 ରୁ सानो 0 ରୁ सानो 0 बा 0 ରୁ सानो कोटा x = 0 तो f x मूल्य केते पकेता 0 ओके लिख दबो कि x tends to 0 minus तमने x = 0 minus s पर s tends to 0 लिख दबो लिमिट चेंज करो limit s tends to 0 s tends to x तो एठी नाही तो पके दियो 0 आंसर वाला 0 तो लेचर वाला हमरो 0 तो बाहर करते हमरो r s l r s l पका समिति लिमिट x tends to 0 plus अच्छा 0 ରୁ प्लस ହେଲା ଆମର କଣ ହବ 0 plus 0 ରୁ ବଡ଼ କୋଟା ଆସିବ 0 ରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆମର ଏଟା କେତେ 1 minus 2x ଏପଟେ ଦବ 1 minus 2x लेखा x tends to 0 plus ता माने x = 0 plus h where s tends to 0 it पके is equal to limit s tends to 0 1 minus 2 whole into 0 plus x 0 plus x is equal to limit s tends to 0 1 minus 2 0 ହେଲା 0 minus 2 ले minus 2x तो मूल्य बगे दे जगह 0 बगे तो इक्वल टू 1 ଆସିବ ए जगह 0 पुट कर दियो 1 0 इक्वल टू 1 वाला तो एल एच बाहर 0 आर एच बाहर 1 तो एठी कोन होची एठी hence limit doesn't exist at x tends to 0 f of x like that one okay तब जो सेकंड का देखिए सेकंड टा होची कि नहीं देखो सेकंड पे चालू इधर का दाम limit x tends to 1 f of x x tends to 0 ପାଇଁ f of x ଟା एग्जिस्ट करू नाही कारण LHL और RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समान रहनी तो एठी कोन होची 1 पे देखो 0 पे सॉल्व करो तो 1 पे देखो पका LHL limit x tends to 1 minus f of x limit x tends to 1 minus 1 और जदी सामना होला वन और जदी सामना होला देखो 0 एटा 1 एटा माइनस 1 और जदी सामना होला
तो 1 ରୁ ସାନ କିମ୍ବା ସମାନ ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି 1 minus 2x ଅଛି କେତେ ଆସିଲା 1 minus 2x ओके एक क्वेश्चन में बोले 1 minus 2x आप कौन स्केच तो लेखा है देखो x tends to 1 minus तब x is equal to ना 1 minus h ना और h tends to 0 that is चेंज कर दियो लिमिट h tends to 0 1 minus 2x जगह ना 1 minus h is equal to limit h tends to 0 1 minus 2 8 1 minus h is equal to 0 बोल दो h is equal to 0 बोल दो 1 minus 0 1 1 minus 2 is equal to minus 1 is 0 वाले लिख दे ठीक है minus 2 minus plus minus 2 1 minus 2 minus 2 plus 2 is क्या था वो limit h tends to 0 minus 1 plus 2h h में 0 बोल दिया कितने जो minus 1 है चला हम minus 1 तो जो बताना RHM limit x tends to 1 plus f of x limit x tends to 1 plus f of x 1 plus 1 ରୁ ବଡ଼ ଯଦି ଆମର 1 ରୁ ବଡ଼ ହେଲା କେତେ ଅଛି ଆମର 3 minus 4x ମାନେ 0 ରୁ ବଡ଼ ମାନେ 1 ରୁ ବଡ଼ ଆଗକୁ ଯିବ ହେଲା ଆମର ଆସିବ କେତେ 3 minus 4x Let go x tends to 1 plus x is equal to 1 plus h where x tends to 0. So let go limit x tends to h to h tends to 0 पकड़ दो 3 minus 4 whole into 1 plus h is equal to limit h tends to 0 3 minus 4 minus 4 is equal to 0 है जो 3 minus नले minus 1 बटन देखो LHS to minus 1 RHL भी minus 1 Okay, that is not equal. LHL is equal to RSL. Hence, limit exists at x tends to 1. Limit f of x. जीरो को जितने टेंस करथिला लिमिट एग्जिस्ट कर नथिला पर जेतले 1 को एग्जिस्ट करछि लिमिट सेतबेले एग्जिस्ट करछि ओके दैट्स इट 6 नंबर रो संपूर्ण सर जाइछि एबे जिबा लास्ट एंड फाइनल नंबर 7 नंबर ओके श्री गुंडीचा दिना मरंती की बाऊ 7 नंबर सजले 14 भी complete so now start 14b the number 7 final number and अलविदा कर दो एक एक्सरसाइज सरल दे दो क्वेश्चन नंबर 7 दे जी let f of x is equal to मूल्य दे दीटा मूल्य जी गोटे 1 हबो आ गोटे 0 हबो 1 केतल हबो if x is rational if x is irrational f of x टा 1 हबो जदि x टा rational जदि x टा परिमेय होची 0 हबो जदि x टा अपरिमेय होची से जदि लिमिट रे जहा भी दउ जदि x टा rational होची ताले 1 हबो जदि irrational होची फंक्शन टा 0 हबो देछि तो क्वेश्चन तो था सॉरी नहीं तो देखे यार f of x टा दे दे ना f of x का मूल्य टा 1 और 0 दे देछि 1 हो जदि x टा rational हो तो 1 पका irrational ले 0 पका so that देखा हमको 10 सेवा को पड़िबो the limit f of x doesn't exist limit x tends to a f of x a point रे exist करू नाही
doesn't exist for any a belongs to R बुझिपारे बुझ f of x टा जदि रैशनल होची तार वैल्यू होची 1 बाय f of लिमिट एक्सटेंड से 1 हबो बा लिमिट एक्सटेंड से 0 कर पेलो ये एग्जिस्ट करूनी जदि a बिलोंग्स टू a जे कोन रैशनल हो बा इरेशनल हो रियल नंबर ना ये भी रियल नंबर ये भी रियल नंबर से तो जे कोन से रियल नंबर पाई ए लिमिट टा एग्जिस्ट करू नाही से ये रैशनल भी रियल नंबर इरेशनल भी रियल नंबर तो जे कोन से एनी रियल नंबर पाई f of x लिमिट एक्सटेंड टू f of x एग्जिस्ट करू नाही एट a पॉइंट ए रे जोटा कि एटा गोटे रियल नंबर एटा जे कोन से रियल नंबर हले भी से रैशनल हो बा इरेशनल हो रियल नंबर कहले रैशनल हो बा इरेशनल हो जे कोन से रियल नंबर पाई एग्जिस्ट करू नाही दिस फंक्शन द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन तो देखेबा सॉल्यूशन कौन देइस लेखा हमको कौन दत्ता अछि कौन दे हमको लिखि दियो f of कौन देछि 1 हबो if x belongs to q बा x is rational लिखि दियो 0 हबो if x is कौन irrational लिख दो if x belongs to q if x does not belong to q जोटा परिमेय न सेटा कोन हो अपरिमेय संख्या एटा हमकु देई देइछ let कौन दे हमरा a belongs to r a belongs to r a belongs to r that means आर अर्थ कोन a belongs to r माने a b any real number a belongs to r any real number पहले LHL फाइंड करो LHL और RHL फाइंड करिया LHL कौन देखिया लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिखिया हैला f of x लिमिट a एटा बाहर कर LHL बाहर करे RHL बाहर करे फाइंड करे अच्छा ये लिखो x tends to a minus ता माने x is equal to ना a plus h where h tends to so a minus h where h tends to 0 तो ये क्या is equal to limit h tends to 0 बताना f of x कितना लिखा है f of a minus h a minus h पटने को एक्चुअली f of a minus h पटने को एटा होची हमरो रियल नंबर अच्छा रियल नंबर पाए तो रैशनल बा इरेशनल कोन पुट करिया 1 पुट करिया ना 0 पुट करिया ये तो परिमेय यदि रैशनल नंबर हो त 1 हबो इरेशनल नंबर हबो भातबले ये तो रैशनल बा इरेशनल नंबर हेइबो तो हमर केते हे जो s टेंड्स टू 0 बोल द्वारा f of a हेइजिवो इज इक्वल टू केते हेइजिवो f of लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a हे जो इज इक्वल टू हमर f of a गला कांस्टेंट हे गला तो f of हमर कोन है a हे जाउची ओके तो एटी कोन हला एटी तमे रैशनल पुट करो बा इरेशनल पुट करो तो होछ कोन एटा तो जे कोनसी रैशनल नंबर हो एटा होची रियल नंबर किंतु देखले आलको हमरो होची रैशनल बा इरेशनल नंबर जे कोनसी रैशनल नंबर हेले 1 होची इरेशनल नंबर हेले जैसे जाहर तो सुधा रियल नंबर ना तो एटी कोन करियो देखियो हेंस लिमिट doesn't exist जाहि पकेले कोन आसीबो फुल आसीबो एटा आसुनी हमरो वैल्यू भी आसुनी कारण एटा जगह तो a माइनस कहले कोन हबो a माइनस कहले हमरो कोन हबो a माइनस कहले से रैशनल नंबर हबो प्लस कहले से रैशनल हबो माइनस कहले कोन हबो x belongs to a 1 हबो 0 हबो तो दीटा ही आसी वैल्यू तो एटी देखो सूत्र दीटा वैल्यू आसो ए जदी 1 एटी 1 आस परिबो एटी 0 बेस पर f of x जगह कोन 1 आस परिबो 0 बेस परिबो तो दीटा आसी तो एटी लिमिट रे हमर कितु गोटे वैल्यू आसे दरकार एटी दीटा आसी एटा कितु लिमिट डजंट एग्जिस्ट लिखि दो ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 7 सहित 14b
कंप्लीट हो जाइए तापर नेक्स्ट चैप्टर हम जिबा 14C आ गोटे जिनस होची 14C जानिया पूर्व हमर किछि फार्मूला मन रखि किछि फार्मूला मन रखि दबो नेक्स्ट चैप्टर 14C गला हमको जोटा भी आगु सब जानिछ तथापि लिखि दा ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला लगा दम फार्मूला some important formula. First formula देखो limit x tends to a जोड़ा आगु जानते limit x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a एटा जानते तुम आगु एटा मन रखतो n a to the power n minus 1 limit x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a n a to the power n minus 1 do you know formula limit x tends to a k is equal to k where k is equal to constant ର limit ସବୁବେଳେ constant ର number 3 formula पढ़िबो limit x tends to infinite 1 by x is equal to 0 x infinite ହେଲା ताले 1 by x ର मूल्य 0 हबो number 4 okay limit x tends to 0 sin x by x limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1 limit x tends to 0 x by sin x be 1 limit x tends to 0 tan x by x is equal to be 1 सेमती रहिबो 7 नंबर limit x tends to 0 x by tan x be 1 okay 8 नंबर limit देखा नहीं limit x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x is equal to e exponential function okay out of limit x tends to 0 हैला n to the power x minus 1 by f to the power x minus 1 by x is equal to log x okay log x sorry x बराबर log a to the base e अब 10 नंबर फॉर्मूला समथिंग limit x to the power 0 x tends to 0 e to the power x minus 1 by x is equal to log a to the base e is equal to 1 I will click the limit x tends to 0 limit x tends to 0 I will convert the formula log 1 plus x base a is equal to log a to the base I will take it above limit x tends to 0 log a1 plus x देखो base e is equal to log e to the base is equal to 1
ଏତିକି ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଦିଅ ଆଉ ଫର୍ମୁଲାଟା ପୁରା ମନେ ରଖିଦିଅ 14C ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।